Hey guys, I'm Ronak and welcome back to the another episode. Today we are going to talk about the Harry Potter and Prisoner of Azkaban, which is one of my favorite book. Obviously, it's much better than the Chamber of Secrets. We'll talk about that later. We are going to discuss this book completely in this video. But before that, make sure you subscribe to the channel. And I'm trying new setup, so please bear with me. I know I am changing a lot of setup, but I'm thinking that which one will look better, then I will continue with that. So let's jump into the Prisoner of Azkaban. This is the third book of the Harry Potter series and I finished it 2 days back. I'm on the fifth book right now, that is Half-Blood Prince. But I thought let's talk about first or third book, otherwise this will be again mess in the brain. So this book starts with obviously the Hogwarts सेशन से पहले हैरी पॉटर के घर पे ये बुक शुरू होती है कि जहाँ पे डर्सली फैमिली हैरी पॉटर को अगेन आइसोलेशन में रखती है, उसे टॉर्चर करती है, बहुत सारी चीज़ें उससे घर का काम वगैरह करना, बहुत सारी चीज़ें उससे करवाती है. उस टाइम पे उसके आंट आ जाती है और आंट आने के बाद यू नो दैट शी टॉक्स अ लॉट अबाउट द हैरी पॉटर एंड उसके फैमिली के बारे में, उसके मॉम डैड के बारे में. इवन दो द डर्सली फैमिली नो कि उनका खुद का चाइल्ड है एंड हैरी पॉटर इज काइंड ऑफ जस्ट लाइक कि है घर पे इसलिए है और उससे सब कुछ काम करवाना है इसलिए काइंड ऑफ दैट थिंग. बट स्टिल हैरी पॉटर वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उससे घर पे कुछ भी नहीं करने को मिलता. इट्स काइंड ऑफ अ गिल्ट और इट्स काइंड ऑफ यू नो आइसोलेशन में रहने के बाद हाउ डू यू फील. दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट थिंग अबाउट द JK Rowling. She writes so well about the isolation part that you can literally feel each and everything in the first few chapters. After that, the aunt come and she talks about the Harry Potter and mom and dad about everything. And Harry Potter left the house because of that he cannot hear this everything and वो वहाँ से चले जाता है. But the part is the way the everything is written, the way aunt talk and the Harry Potter respond to that. Harry Potter का घर छोड़ के जाना, ये सारी चीज़ें इट्स सो ब्यूटिफुली रिटर्न कि जो यू नो पढ़ते हो तो यू कैन फील ईच एंड एवरी कनेक्शन विद द हैरी पॉटर एंड विद ऑल्सो डर्सली फैमिली. सो दैट्स द गुड पार्ट अबाउट द फर्स्ट बुक. एंड आफ्टर दैट देर इज ए नाइट बस. ऑब्वियसली अब रात को घर से हैरी पॉटर बाहर आ चुका है एंड उससे अब कहाँ जाना है पता नहीं है. और देन देर इज अ नाइट बस विच आई absolutely loved, but also one of the hated thing for me because night bus don't make me any sense because we have a lot of things in the Hogwarts or we have a lot of things in the magics like उसे अब घर से तो बाहर निकाल दिया गया है बट उसे जाना है आइधर कहाँ पे तो रहने के लिए जाना होगा. ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम द हॉगवर्ट्स so उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर सकते हैं. we have like broom, we have a lot of magics. He can literally call anyone, he can do obviously phone call, he can do a lot of things to just where he can stay. बट वो कुछ नहीं होता एंड देयर इज नाइट बस देयर कि जो वो भी डोंट मेक मी एनीथिंग क्योंकि उसमें दो ड्राइवर होते हैं. ऑब्वियसली ड्राइवर होता है विच जैसे चलाना भी नहीं आता. देन दे पिक अप द हैरी पॉटर एंड दे ट्रैवल थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग. दैट इज ट्रिपल डेकर बस एक्चुअली कि जो यूजुअली बहुत सारे विजार्ड्स या जो मुगल्स वगैरह है उनको कैरी करती है और took to the safe place and वहाँ पे जाके हैरी पॉटर को रखते. बट बस में ना ही साफ सफाई है विच इज़ आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हॉगवर्ट्स और द मिनिस्ट्री. अगर कनाइट बस है देयर शुड बी समथिंग यूनिक अबाउट दैट. ऑब्वियसली द बस इज यूनिक ट्रिपल डेकर बस बट ना ही उसमें जो बेड है वो भी साफ़ सुथरे नहीं है. देन देर इज़ तो बेड्स वगैरह है वो भी स्क्रू यानी कि वो दैट्स whenever the speed breaker comes then bed moves ahead, then bed moves back, so they are not screwed to the ground, the platform of the bus and a lot of things. Even you know the Harry Potter जब वो हैरी पॉटर को पिकअप करते हैं then they take a whole night to reach at the destination which I absolutely didn't love. I mean night bus, I think this concept is really good but the way they explained or the way they talk about which I did not like about the night bus. हाँ अगर ये बचपन में जब मैंने पढ़ी थी I was like okay I really wanted to go in the night bus one day. Obviously just like we all wait for the Hogwarts later, that's the same thing happened with me. Like I was waited कि okay कभी तो night bus में बैठने को मिलेगा and this is the same thing happened with me. After that we get to know about the Ron and Hermione वहाँ पे मिल जाते हैं, सारे students वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं and after that they go to the Hogwarts and Hogwarts जाते टाइम then there are Dementors जो कि है जो यानी कि जो काइंड ऑफ डिप्रेशन वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि विच इज़ डेफिनेटली अ गुड. आई मीन डिमोंटर्स आर नोट फॉर द डिप्रेशन स्पेसिफिकली कि जो दे काइंड ऑफ ट्राई टू केस यू एंड दे ट्राई टू सक ऑल द हैप्पीनेस फ्रॉम यू. एंड वो वहाँ पे क्यों आते आई डोंट नो. ऑब्वियसली दे
if they are there to security, if they are there to protect, obviously the prisoner of Azkaban is, obviously Sirius Black is आउट ऑफ द एस्करमैन, इसलिए वो काइंड ऑफ नज़र रख रहे हैं सब तरफ, सब हॉगवर्ट्स पे। और वो फिर ट्रेन में क्यों आते हैं? ट्रेन में आते हैं तो हैरी पॉटर के पास क्यों आते हैं? और व्हाई दे आर ट्राइंग टू सक द हैप्पीनेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी चाइल्ड? आई मीन दैट्स द थिंग, आई रियली डोंट नो कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इफ दे आर फॉर द प्रोटेक्शन, दे शुड प्रोटेक्ट एवरी वन, व्हाई दे आर सकिंग द हैप्पीनेस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन? Then we get to know about the Lupin there, obviously, but Lupin वहाँ पे आई थिंक यूज़ करता है कि नहीं? आई मीन लुपिन जब ऑब्वियसली जब वो हैरी पॉटर पे अटैक कर देते हैं डिमॉन्स्टर, एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू सर्व द हैप्पीनेस, और वहाँ पे उसी कैबिनेट पे लुपिन भी होता है। लुपिन आई थिंक उस पर मैजिक करता है, बट उससे पहले हैरी पॉटर इज लाइक लिटरली गॉन, कि उसे दिमाग में कुछ नहीं आता, ही इज़ ऑलरेडी लॉस्ट इन दिस, already lost in that cabinet. And we get to know about the Lupin, and they talk about the dark chocolate and everything, ki chocolate can give you happiness. Obviously I do love chocolate, so if you want to send me the Amazon gift card, then there is a link in the description. I will buy chocolates from that thing. Okay, so then we get to into the Hogwarts, and we get introduced to the Lupin as a teacher, which is one of my favorite part about this book. This teacher, the Lupin teacher, is so awesome that I literally loved about this book. I mean, there is equally, see, we get to know about the Sirius Black also, but I don't want to talk about the Sirius Black right now, but I want to talk about the Lupin. But the portion of Sirius Black is like, but we should know more about the Lupin in this book, because Lupin is the मेन कैरेक्टर अबाउट द प्रिजनर ऑफ एस्काबान। उसके पास के बारे में कुछ ज़्यादा भी इसमें डिटेल्स में नहीं दिया गया, दो जब फर्स्ट टीचर पे आती है, यानी कि द वे लुपिन हैंडल्स ऑल द स्टूडेंट, द वे लुपिन केयर्स अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली अबाउट द हैरी बट अबाउट द एवरी वन, इज सो ऑसम। देन वी गेट टू नो अबाउट द लुपिन्स, व्हाट आई कैन से, द ड्रॉबैक और द harsh truth about Lupin, ki what is he really fear of, the way we see in the Harry Potter is fear of Demondas, the way Lupin is fear of the moon, and we see in that the locket, in that the cabinet, when they try to use some kind of magic and they try to learn some kind of magic. And after that we get to know about the Lupin as in details when he tried to explain. But there is a Lupin character which I really enjoyed in this book, and Lupin should have given the more percentage of in this book, but उतना भी ज़्यादा हमें नहीं मिलता। लुपिन के बारे में बेसिक पता चल जाता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है कि जब लुपिन जब एक्चुअली वो ग्रेजुएशन कब हुआ था, उसके फ्रेंड के साथ जो हुआ था, ही डोंट एबल टू स्टे विद द फ्रेंड्स, काइंड ऑफ दोज थिंग्स। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि लुपिन की चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या। एक्चुअली वी नीड अ कंप्लीट सेक्शन ऑन द लुपिन्स। लुपिन पे एक कंप्लीट बुक भी बन सकती है, क्योंकि ही इज़ अ काइंड ऑफ वेयरवुल्फ, कि जो वोल्फ में भी कन्वर्ट होता है और मैन भी रहता है। दैट्स द रीज़न उसे कभी पेड जॉब नहीं मिला था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसे, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम, बट हॉगवर्ट्स में उसे कभी जॉब नहीं मिला था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उसे एज ए टीचर जॉब मिला था। वेयर ऑफ वोल्फ होने के रीज़न से उसे कभी भी जॉब नहीं मिला था, and this is the first time उसे मिला था। he says everything about that, and we get to know about the little bit part about the Lupin, that what is the Lupin, what is the background about the Lupin, and उसके बचपन में क्या क्या हुआ था, why the Snape hates Lupin, और स्नेप ने लुपिन के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में बहुत छोटा सा पोर्शन है। बट आफ्टर दैट वी गेट टू नो अबाउट लुपिन, एंड लुपिन इज डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुपिन का हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हर्माइनी एंड रॉन, विच इज अगेन द फ्रेंडशिप इज रियली इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन गो वॉच दैट वीडियो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट, द फर्स्ट डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट बुक. Then there is a friendship, but here we get to know about the Ron and Hermione, how they are in love with each other, and the only problem is Ron have rat and the Hermione have the cat, and but the problem is, you know, in the first book we get to know about that no one can carry the rat in the Hogwarts, but still Ron के पास rat होती है. I don't know how, which is maybe the plot hole in this book, but हरमाइनी को इतना स्मार्ट तो होना चाहिए कि हरमाइनी जब उसकी कैट को लेके आती है रॉन और हैरी के पास, तो उतना तो उसे नॉलेज होना चाहिए कि ऑब्वियसली इट्स द एनिमल नेचर की कैट रैट के पीछे जाएगी, कैट माउस के पीछे जाएगी, इट्स डेफिनेटली फॉर श्योर, ये तो सबको पता होता है। एटलीस्ट हरमाइनी को उतना तो स्मार्ट होना चाहिए था कि
कैट को वहाँ पे ना लेके जाए, स्क्रैबर आई गेस, यस, उसे वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए था, बट स्टिल वो जाती है और वो रॉन से सॉरी भी नहीं बोलती कि उसके बारे में कि यार आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ माई कैट दिस हैपेंड। शी सेज कि नहीं, you should take care of your mouse, you should take care of your cat, you should take care of your rat and all this thing, but वो कभी सॉरी नहीं बोलते। एट द एंड ऑफ द डे रॉन ही सॉरी हरमायनी को बोलता है कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए थी वगैरह। We also in this book I guess we get to know that Ron and Harry Hermione से बात करना छोड़ देते हैं। I guess in the middle of the book we get to know that, and that's the reason I love Hermione as a character also. She's definitely smart, but dude, if you are smart you should know about the cat behavior, you should know how to behave about the cat. Obviously I love Hermione as a character, but इतना तो बेसिक सेंस होना चाहिए था कि क्या चीज़ें कहाँ पे करनी चाहिए थी। एंड देन देयर इज अ सीक्वल आफ्टर दैट, वी गेट टू नो अबाउट देयर फ्रेंडशिप एंड हाउ दे डू द थिंग्स, देन एवरीथिंग अबाउट दैट। Then there is a time travel wala scene, but before that we talk about the time travel wala scene. There is a Quidditch match also, where Quidditch match is between the Gurudwara and Nakshanti, which I do not like this much because a lot of things happen in this book, and actually this book started to turn into the lot of bigger things. I mean, first two books are more about the world building, what happens actually in the Hogwarts, what is Hogwarts, what are the characters, but यहाँ से actually में शुरू हो जाती है। Then we get to know about the Sirius Black, and Sirius Black की जब एंट्री होती है, and Harry Potter and Sirius Black were talking, and Sirius Black उसे बोलता है you can stay with me forever, and Harry वहाँ पे 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाता है, and he can ready to go with the Sirius Black, which is काइंड ऑफ माई फेवरेट पार्ट इन दिस बुक। और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाती है, एंड बिकॉज उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि नाउ आई कैन गेट रीड ऑफ द डर्सली फैमिली एंड आई कैन स्टे विद समवन आई नो, आई कैन स्टे विद द सीरियस ब्लैक। तो इसके लिए वो 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज हो जाता है और वो सीरियस ब्लैक की सब कुछ सोचने लगता है। दिस इज समथिंग आई रियली लव इन दिस बुक, बट to be honest, Lupin should be given the more priority in this book rather than Sirius Black. Obviously Sirius Black is good character, but there are very few incidents where I really enjoyed about the Sirius Black, but other than that Lupin is obviously the topmost priority for me in this book, and we should know more about the Lupin, but obviously उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। Then there is a thing about the time tunnel which I want to talk about. टाइम टनल से देयर इज़ अ फायर बॉल्ट वाला भी एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे हरमाइनी हेल्प हैरी इन मेनी डिफरेंट वेज, एंड दैट्स द रीजन द फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। बट देयर इज़ अ टाइम टर्नल वाला थिंग कि जहाँ पे एक्चुअली ये बात समझ में नहीं आती कि हरमाइनी पास टाइम टर्नल आया कहाँ से, और उसके पास आया तो किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया। हाउ शी कैन बी एट द सेम टाइम एट द 2 क्लासेस, मतलब 2 क्लासेस में एक तो है कि जो मैजिशियन वाला क्लास है और दूसरा है स्नेप वाला क्लास, इन वो दोनों वहाँ पे होती है। टाइम टनल करके ऑब्वियसली वो चेंज होकर आती है, बट स्नेप ने भी उसे नोटिस नहीं किया, विच इज़ काइंड ऑफ विच आई डोंट लाइक। मतलब समझ में आता टाइम ट्रैवलर इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग, बट फर्स्ट थिंग इज उसके पास वो आया कहाँ से। सेकेंड थिंग, वो इफ शी कैन बी एट द 2 places एट द सेम टाइम, आई मीन देयर इज अ थिंग आइदर यू कैन गो फॉर द दिस क्लास और यू कैन गो फॉर द दिस क्लास। वो दोनों क्लास एट द सेम टाइम कैसे अटेंड करती है, विच आई डोंट लाइक इन दिस बुक, बिकॉज ऑब्वियसली किसी ने नोटिस नहीं किया। आई मीन ऑब्वियसली नॉट अबाउट द स्नेप, Snape should have noticed that Hermione using is something to be at the same place, or the teachers don't even talk with each other about the who are in the class, what are they doing, or who are present, who are absent. They don't even talk about after the period. I mean, that's a kind of curious to know. Even after that, the other students, they never noticed Hermione is going for the 2 class at the same time. Obviously time travel karke she is going back and she is going to be present at there, but the time travel is I love time travel, but the time travel here is so confusing. I mean, so many things. There is a, I guess, grandfather paradox, then there is a bootstrap paradox, a lot of paradox I know about the time travel, but what is this time travel, I'm little bit confused, because Hermione ये तो फर्स्ट क्लास में है जहाँ पे वो ग्रीम वाला हमें पता चलता है कि what is Harry gets green and let we know about the green, what is exactly green and everything, and the magician told that okay, this is the green and you get the green, that means something big and dangerous is coming, and Hermione is also present there to attend that class. After that there is a Snape class जहाँ पे हम पहले Hermione को नहीं देखते, आफ्टर उसके बाद में वो वहाँ पे आ जाती है, अचानक से आ जाती है। बट सेम स्टूडेंट नहीं हो सकते क्या दोनों क्लास में, या क्लास में किसी ने भी नहीं दिखा, स्नेप ने नहीं दिखा, विच इज़ आई थिंक दिस इज अ प्लॉट होल इन दिस बुक विच आई डोंट लाइक अबाउट द टाइम ट्रैवल थिंग। एंड अगेन वी हैव एट द एंड ऑफ द बुक वी हैव अगेन द टाइम ट्रैवल आफ्टर द क्विडिच मैच।
when they get to know about that, then there is a time travel at the end of the book again, which I don't like. I do enjoy time travel. There is a book called The Order of Time on the specifically understanding the time, and I really enjoyed the quantum physics, neuroscience, a lot of this stuff. But when I talk about this time travel, I'm a little bit confused, because history, when we go back to the past, then there is the same thing going to happen, and still how Harry is present at that moment to save Harry. I mean, if you go to the first case, then how the Harry is coming there? If you go to the second case, then if Harry is coming there, who was there at the first stage? So a lot of confusion between this time turner, and I really hated this concept of time travel in this book. When I start the time travel, when Dumbledore tells them that you have to go back and so you have to go back and set up the few things, you have to understand the few things. I literally, like, around the 40 to 50 pages around the end of the book, the only basis on the time turner, that they use the time travel, they go back to the Hagrid's house, they do a lot of things, then Harry saves Harry, all these things we get to know about 40 to 50 pages of the book at the end, but which I really do not enjoy. It's good to read that, but to be honest, I have not enjoyed it this much in this time, because last time जब मैंने पढ़ा था around, I'm reading this book third time, and last time मैंने जब पढ़ा था around 10th standard or 11th standard, and I really enjoyed this concept. But right now, when I understand a lot of physics, a lot of quantum physics, then I realize that okay, this is something problematic with this book. This is something problematic with the time tunnel. I have no idea what is things going on in this last 40 pages. How the Harry comes at the same place, which type of paradox they are using. A lot of things happen. So obviously, a lot of things are going in this book, and this is something that I really hated as well as enjoyed after the Quidditch match. And end of the book is all about how the things are going to happen, what are the things happened, and how the things are changed between that, how the Dementors Harry uses, and how he learn everything about that. And Lupin again goes back to the after. I mean, Lupin quit the job, and we get to know more about the Sirius Black. Well, I'm not talking about the Sirius Black, because we have a lot of portion about the Sirius Black in the upcoming books, that when they meet, when they talk. That's the reason I'm not talking about the Sirius Black in this video. But obviously we get to know about the introduction about the Sirius Black, who is the prisoner of Azkaban, and उसने जो चीजें की है, how he helped them. Then there is a sequel, there is a very less, not exactly, but the face off between the Wormtail, Snape, then Lupin. A lot of thing happens there, and I don't want to get into that discussion, otherwise this video will become much longer, and I don't want to do that. So these are the few things I enjoyed in this book. I really enjoyed the friendship point. First one is, which is Hermione, Harry and Ron, which is absolutely great, but Hermione is not doing a great smart work here, which I hated for that little bit about the cat experience. Then I really love the Lupin character, which we should know more about the Lupin, but we don't have actually. अगर Lupin पे एक अलग से book भी आ सकती है if we talk about that, but the Lupin का background क्या था, उसकी childhood के बारे में, उसके graduation के बारे में, उसका war orf के बारे में, उसका और Snape का क्या करेगा, उसके friends के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर और डिटेल में हो जाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता. But I guess it's okay, and this is all about I liked about this book. These are the all things I hated about the book. The night ride, then there is the Quidditch and the time tunnel, which are the things I hated about this. Other than that, I really enjoyed this book, and I really like the Prisoner of Azkaban, because this book is so intense, and यहाँ से actually the चीज़ें build up होना शुरू हो जाती थी. First two is all about the build up, but the third books, it's all about the characters, the depth of the character. Hogwarts के बारे में, when Hagrid's get into the placement, he becomes a teacher in the Hogwarts, and वो जो सारी चीज़ें करता है, the hilarious moment are so definitely good. So if you have not read this, go check the link in the description. You will definitely enjoy this book. And if you want more videos on Harry Potter, do let me know, comment करके बताओ कि what do you want to know more about the Harry Potter. I will definitely try to make specific video on that, and let me know about the setup. Do you enjoy the setup or not? And I guess that's all for the Harry Potter third book. There are few more books, and I'm going to make videos on all the books. Also, there are video going to come on the every character, not every character, but some of the famous characters that I really enjoyed in this book. So make sure you subscribe to this channel to know more about this, and don't forget to follow me on the Instagram to latest updates. And I guess that's all for today's video. See you in the next one. Bye bye, tata, take care.